हाय, मेरा नाम नीमो है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैक्सिमम सब अरे प्रॉब्लम। So let's look at what the problem says. Given an integer array nums, find the subarray with the largest sum and return its sum. Subarray का मतलब क्या है ये देखते हैं. A subarray is a contiguous non-empty sequence of elements within an array. Let's look at this problem using an example. तो ये हमारा array है and subarray is a continuous portion of an array. मतलब ये जो green portion है, this can be an subarray. This can be a subarray or this can be a subarray. This can be a subarray. Subarray का मतलब यही है कि एक continuous portion है array का, उसको subarray कहते हैं. Subsequence is different. Subsequence मतलब मल्टीपल पोर्शंस ऑफ अरे, ये और ये दोनों मिला के जो हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ सब सीक्वेंस. इट इज नॉट अ कंटिन्यूस पोर्शन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सीक्वेंसेस इन एन अरे. So we have to output a subarray which has maximum sum in this entire array. जैसे कि ये जो ग्रीन पोर्शन है, कि इस केस में यू कैन सी दैट सब अरे 4 -1 2 and 1, इसका सम इज 6, दैट इज द लार्जेस्ट इन दिस एंटायर अरे. सो लेट्स लुक एट हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. वेरिएबल लेंगे टू स्टोर द लेंथ ऑफ आवर अरे. Then we will take a variable called maxisum to store the maximum sum of the subarray. तो maximum sum में अब हम initially store करेंगे first element of the array और एक लेंगे current sum जो अभी फिलहाल 0 है. Now we will run a for loop. अब हम iterate करेंगे through all the elements of the array और update करेंगे हमारा current sum. Current sum will be current sum plus nums of I. अब हम हमारे maximum sum वेरिएबल में maximum of current sum and maxisum स्टोर करेंगे. नेक्स्ट, सपोज इफ current sum की वैल्यू जो है वो 0 से लेस देन हो गई, यानी कि current sum की वैल्यू नेगेटिव हो गई. सिंस हमारे अरे में नेगेटिव एलिमेंट्स भी है, तो हमारी current sum की वैल्यू नेगेटिव भी जा सकती है. इसलिए if current sum is less than 0, then we will again update the current sum to 0 so that हमारा current sum negative values ना store करे. At the end we will return the maxisum which will give us the maximum sum or the maximum subarray in this array. Let's run it and see. Max of, yes. Let's submit this. Accepted, yes. इस वीडियो के लिए इतना ही. Subscribe for more.